जी। सर, आपने रिस्क मिटिगेशन की आप बात कर रहे थे कि पहले से ही अर्ली वार्निंग सिस्टम हो जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। इसके लिए ग्लेशियोलॉजिस्ट की बड़ी टीम की ज़रूरत होगी, ज़्यादा रिसोर्सेज़ की ज़रूरत होगी। आपने चर्चा की कि किस तरह से इतना आसान काम नहीं होता ग्लेशियर्स को स्टडी करना क्योंकि इनएक्सेसिबल रीजन होता है, जहाँ जाना मुश्किल होता है। अभी भी इस दौरान भी बहुत सारी ऐसी जो ये ट्रिगर पॉइंट था वहां तक पहुंचना भी वैज्ञानिकों के लिए इतना आसान नहीं रहा होगा। हेलीकॉप्टर सर्वे किए गए। साथ ही जब इंडियन हिमालयन रीजन की बात आती है तो कई स्टेट्स हैं जहां इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं या वो इसके लिए प्रोन है। तो वहां की सरकारों को किस तरह से, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कंसर्टेड एफर्ट करने की जरूरत है, सबको मिलकर इस पर काम करने की जरूरत है। खास तौर पे वो राज्य, वो इंडियन स्टेट्स जहां जो हिमालय से सटे हुए हैं, वहां इस तरह की मॉनिटरिंग होना जरूरी है ताकि जान माल को नुकसान ना हो। 10,000 से इंडियन हिमालयन रीजन में 10,000 से ज्यादा ग्लेशियर्स हैं और इस तरह की स्टडी वहां की जानी चाहिए। मॉनिटरिंग लगातार होनी चाहिए सर वहां की। Yes, Purnima. This is very much required monitoring. And again, I say that since this region is quite big, and if we really want to have a concerted effort, what I mean that whatever states are attached to the Indian Himalayan region, wherever we see these glaciers, and that state first-hand information they can get from the satellite data, remote sensing data. Remote sensing data will be able to understand lot of features even if their area is inaccessible. But to give a ground truth validation wherever possible, and each state would have a team or dedicated institute. They can understand from the ground observations and from the satellite data and make a comprehensive understanding what exactly happening to the glaciers from the upstream climate change, what exactly happening to the downstream, what exactly happening to the rock formation. So what I want to say concentrated effort means all the states and Indian states attached to the Indian Himalaya, wherever we have glaciers, and just like take the example of Uttarakhand. So if we have our dedicated team constantly, we study and all the data set whatever we are collecting from the ground-based observation, whatever we are getting from the satellite data, and if we have a collected data at one place and give some sort of thought of what process has gone and how we can understand the vulnerability, etc., then it will have a great impact to understand the phenomena, what has been going on into the Himalayan glaciers. So if we take the care of our local problem and all the local problem, if we just place side by side, then we'll have the all Himalayan regional problem, and then from the regional problem centralized, there should be some central monitoring system, and if this from the center, once we get the input from the all the states, but state will be doing their work, this state will be doing this state, and all if they give information to the center, and there will be centralized monitoring system, centralized monitoring team, and then I think we will be able to do the justice what exactly happening to our Indian Himalayan state.